20th question, children, where you have to integrate under root of 1 minus under root x again. So you have two roots there, and again that means this is function inside another function, composition, which we do not know how to integrate. So naturally the substitution, this root x has to be removed by substitution. So what works best here is when you have minus and plus sign, then we've discussed that earlier also, that the substitution that works is your cos of theta or cos t here. Okay, why? Because इसके दोनों formulas में फिर reduction हो जाता है. So we will put root x is as cos t. Then to find dx, I've squared that. So x will become cos square t. So dx on differentiating would be 2 cos t and derivative of cos t minus sin t dt. Okay, so doing that substitution here, that's your expression, and 1 minus cos t then becomes 2 sin square t by 2, and this becomes 2 cos square t by 2, half angle formula. ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी ये सब्स्टिट्यूशन कैस आउट किया था, चेक आउट किया था. ओके, नाउ सो अंडर दैट सब्स्टिट्यूशन root x we have replaced by cos t, so this dx would be replaced by this whole big expression here, which is minus 2 sin t cos t dt. Fine. Then after that, next what are we doing is this sin t also we are breaking by half angle formula. Why? Because this by half angle formula, when this has come, the squares will get cancelled, will balance out the root sign, and this will become sin t upon cos t. तो ये sin t, यहाँ पे हमारे पास half angle formula अगर आप sin t में लगाते हो, so you have 2 sin t by 2 cos t by 2. That 2 I have merged with, we already had a 2 here, so another 2, so minus 4 हो गया, and then this sin t by 2 will be put with this sin t by 2. ये root तो cancel हो गया था, square तो, so this will become sin square t by 2, and 1 cos t by 2 that you get from here would cancel out this. तो हमारा function थोड़ा minimize हो गया like this, and then this sin square t by 2 further we can write in terms of cos t. Okay, same half angle formula, 2 upon 2 कर दो, तो this would be 1 minus cos t. Okay, so it's your understanding, children. ऐसा कर सकते हो, या अगर आप यहाँ इसको सीधे rationalize करते तो भी वही function आता. See, you could have done it like multiplying it by conjugate of denominator. तो ये denominator बनता आपका 1 plus cos t into 1 minus sin t, which 1 minus cos t, which would become 1 minus cos square t, which is sin square t. तो ये sin t पूरा भी cancel हो जाता सीधे भी. Okay, and यहाँ आपका हो जाता 1 minus cos t whole square, that square would cancel out this root sign, so you would be left with 1 minus cos t from here, and ये balance होके only cos t here. तो जो भी strike कर जाए एग्जाम में आपको, ओके, ये फॉर्म देख के हाफ एंगल फॉर्मूला आता है, तो फिर मैंने ये ऐसे कर दिया. अगर किसी को कॉन्जुगेट स्ट्राइक कर रहा है तो उसका भी काम बन जाएगा. एट द एंड यू विल एंड अप गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. ओके, सो नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस cos t इनसाइड, तो अगर ये cos t आए, ये तो इंटीग्रेबल आ गया सीधे फंक्शन, इसको हम सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड हियर दिस वुड बिकम cos स्क्वायर t. सो अगेन यू वुड गो फॉर योर हाफ एंगल फॉर्मूला हियर, बिकॉज स्क्वायर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, कॉस एंड स्क्वेयरिंग. सो अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. अच्छा, ये 2 ऑलरेडी यहाँ था हमारे पास, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अदरवाइज आप हाफ एंड वो करके जैसे भी करते. सो 2 cos स्क्वेयर t वुड बी रिप्लेस बाय 1 प्लस cos 2t. All right, derivative of cos t becomes sin t. So that's your first part of the function. Then इसका 1 का भी इंटीग्रल हमें आता है, and now cos 2t का भी हमें इंटीग्रल आता है sin 2t upon 2. तो सब इंटीग्रेबल फॉर्म आ गई है. All right, now getting back to, you will have to replace our t by x. So x we had said here is cos t, so we have to get the expression in terms of cos t. That means anyhow अभी यहाँ पे sin t था, तो ये sin को मुझे cos के terms में लिखना पड़ेगा, because replacement मेरे पास है cos t is under root x. Okay, so I have used my formula identity, sin t is under root of 1 minus cos square t, putting value of cos t root x, this will become x. ओके, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया साइन टी का. एंड देन हियर टी, तो डायरेक्टली फिर आपका टी रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से कॉस, ये कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स से. So t is cos inverse of root x. You'll have to go back to where you had done the substitution. And then sin 2t. Sin 2t को again आपको break करना पड़ेगा. 2 sin t cos t straight away root x. And sin t जैसे यहाँ था under root of 1 minus x. So आप चाहो तो इसको फिर merge भी कर सकते हो, दोनों common root हैं, तो under root of x minus x square भी लिख सकते हो. Okay, so that's your answer. Okay, then someone has asked for question number 33.
ऑलराइट बेटा, देन फॉर द 33rd वन, ये मॉडुलस फंक्शंस हैं, ये ब्रेक करके जैसा लास्ट ईयर आपने ऐसे एक्सप्रेशन आए थे इन इनइक्वालिटीज, रिमेंबर? ओके, सो वी हैड डन, सी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 we know is negative for this range, for smaller than 1 it will be negative, तो इसको हम नेगेटिव टाइम्स करेंगे तो साइंस ऑल्टर हो गए, 1 माइनस एक्स हो गया, एंड फॉर ग्रेटर देन 1 इट वुड बी द फंक्शन वुड बी पॉजिटिव, सो एज इट इज. लाइकवाइज इसका डेफिनेशन चेंज होगा एट x इज इक्वल टू 2. फॉर स्मॉलर देन 2 इट इज नेगेटिव, तो हमने ये 2 माइनस एक्स कर लिया. फॉर ग्रेटर देन 2 इट विल बी x माइनस 2. लाइकवाइज दिस विल बी फॉर स्मॉलर देन 3 इट वुड बी नेगेटिव, सो 3 माइनस एक्स. फॉर 3 एंड ग्रेटर इट वुड बी पॉजिटिव, सो एज इट इज. ओके, अब ये डेफिनेशन हम यहाँ ब्रेक करेंगे. सो वट एवर द गिवन लिमिट वॉज फ्रॉम 1 to 4 एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट इफ यू पुट ऑल दीज थ्री फंक्शंस टुगेदर, सो they are going to change the entire function, क्योंकि वो रिजल्टेंट है ऑफ दीज टू फंक्शन, क्योंकि ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे चेंज हो रहा है, तो नेट रिजल्टेंट भी आपका 1, 2 एंड 3 पे चेंज होगा. तो हमें लिमिट गिवन थी 1 to 4 से. ओके, तो लेसर देन 1 का हमें कंसर्न ही नहीं है. सो इन फ्रॉम 1 to 4 वी विल हैव 2 पॉइंट्स इन बिटवीन, दैट इज 2 and 3. सो विल हैव टू ब्रेक द लिमिट. Okay, that property. So I'll break it as 1 to 2, then further 2 to 3, and then 3 to 4. So in three limits we'll have to break this entire interval because the definition is changing. So from 1 to 2 only your first function would be negative, rest all the positive, rest both the functions will be negative. Greater than 1 आ गया ना, greater than 1, तो ये function तो positive हो जाएगा, but smaller than 2 तो ये भी नेगेटिव है, एंड स्मॉलर देन 2 डेफिनेटली मीन्स स्मॉलर देन 3 एज वेल, तो ये दोनों सेकंड एंड थर्ड फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे. ओके, देन फ्रॉम 2 to 3 नाउ फर्स्ट टू फंक्शंस विल बिकम पॉजिटिव and the third will still remain negative. For greater than 3 all the functions will become positive. ओके, यहाँ से स्टडी करके इसको आप समझो कि कब कौन सा फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है. अकॉर्डिंगली हम ब्रेक करके उस फंक्शन को अकॉर्डिंगली लिखेंगे. वेर एवर इट इज नेगेटिव वी नो हाउ वी हैव टू राइट इट, वेर इट इज पॉजिटिव हाउ वी हैव टू राइट इट. सो सिंप्लीफाइंग दिस टोटलिटी में दिस इज कमिंग एज 4 minus x, this whole expression in this range. The function would be only 4 minus x. For this range it's coming simply as x. For this range it's coming as 3x minus 6. Okay, ये सब you have to put together. After that simply integrate करना है. Okay, then it's only calculation. This will become 4x. x का integral is x square by 2. इस range के within इसको calculate कर लो. Likewise x का integral हो जाएगा x square upon 2 in this range and so on so forth. Okay, then you just have to work it out at upper limit and lower limit. ओके, लोअर लिमिट माइनस होती है वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, इसमें मैंने लगा दिया आपका a प्लस बी, a माइनस बी, 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, सो 3/2 into 7, एंड ये भी मैंने इसको साथ में मर्ज करके. कैलकुलेशन इज अप टू यू, हाउ यू फाइंड इट कन्वीनियंट, डू इट दैट वे. सो दैट्स योर रिजल्टेंट.